আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज मेरे साथ हैं वसीम अली और आज बात की जा रही है फ्रांस के हवाले से कि फ्रांस के वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ 10 एयरबस एयरक्राफ्ट की बात की है और मुआहिदा भी हो चुका है और बांग्लादेश और फ्रांस के दरमियान में ये मुआहिदा नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा ताल्लुकात को। और आज हिंदुस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि सफारती सतह पे बांग्लादेश ने कई ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बना लिया है। बरतानिया की बात करें, फ्रांस की बात करें और साथ ही साथ अमेरिका की बात करें तो बांग्लादेश ने G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर कई ममालिकों से राब्ते किए और उनके साथ मुलाकात किया और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत हुई है और साथ ही साथ नए मुआहदे हुए हैं। वसीम भाई, आज इसी हवाले से वीडियो है, वीडियो का आगाज़ करें। जी, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बने बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। After the G20, many world leaders took a detour. Instead of going home, they visited other countries. US President Joe Biden went to Vietnam. French President Emmanuel Macron headed to Bangladesh. It was a very important visit, the first one by a French president in 33 years. As always, Macron hit the right notes. He visited a memorial to Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh's founder and also Prime Minister Sheikh Hasina's father. His talks with Hasina covered a number of issues like defense, trade, and the Indo-Pacific. There is speculation that Bangladesh could buy Rafale jets, the same ones that India has. So what exactly is brewing here? To understand that, we must understand Macron's ambitions. He unveiled an Indo-Pacific strategy in 2018, the only European leader to do so. He sees France as an Indo-Pacific power, not a US ally in the region, but a power in its own right. So in Dhaka, Macron talked about a third way, one that is different from China and the US. Listen to this. We have a common desire to safeguard the independence of our countries, to not give in to any external pressure, and despite all current conflicts, to basically safeguard our freedom of sovereignty. As you know, I stand up for this third way in the Indo-Pacific region, based on the respect of sovereignty and the strategic autonomy of our partners. Et l'autonomie stratégique de nos partenaires. And how did Sheikh Hasina respond? The Bangladeshi Prime Minister emphasized on regional stability. She said French and Bangladeshi leaders will play responsible roles. To ensure the geopolitical stability in the Pacific region, leaderships in both Bangladesh and France will play responsible roles. Where do the fighter jets come in? Bangladesh has announced a plan to modernize its military. They're buying fighter jets. 16 of them have been bought from China, the Chengdu J-7 jets. But Dhaka wants more. They want Western fighter jets in their arsenal too. And reports say it's down to two options, the Eurofighter Typhoon or the French Rafale. Paris may or may not get the fighter jet deal, but they have already scored another one. Bangladesh is buying 10 Airbus planes from France. The deal is worth around $3.2 billion. It is also symbolic. Bangladesh's flag carrier operates 20 planes. Most of them are American Boeings. But now Dhaka is going French. Beyond these deals, what are the political gains for President Macron? Well, Bangladesh is an Indo-Pacific country. It has a coastline of 720 kilometers, and right now it's hot property. Russia is building nuclear plants in Bangladesh. China has invested around $10 billion in this country. And then, of course, you have India, arguably Dhaka's most important partner. From the looks of it, President Macron also wants a piece of this. He visited the Pacific Islands in July. He also made a stopover in Sri Lanka. So the Indo-Pacific is firmly on his agenda. But will Dhaka buy his third way? A lot depends on how India plays this. Recently, the United States slapped sanctions on Bangladeshi officials. The reason? Alleged election interference. Washington wants a clean and fair election next year in Bangladesh. Dhaka says it's none of your business. So the relations were a bit frosty leading up to this weekend. But then came the G20. India invited Prime Minister Sheikh Hasina as a guest.
And in New Delhi, she met multiple Western leaders, including US President Joe Biden. In fact, Biden took a selfie with Hasina and her daughter. She also had an interaction with Rishi Sunak. These pictures went viral. Sunak was seen kneeling beside the Bangladeshi Prime Minister. Such interactions are quite important. They allow frank conversations between leaders. They also prevent misunderstandings. At the G20, Bangladesh was also included in the Biofuel Alliance. Other members include the US, Italy, and the UAE. And India facilitated all of this. I'm sure Dhaka knows this. New Delhi can leverage its relations with the West to lobby for Bangladesh. And why is that important? Because the West is a huge market for Dhaka. Look at their top export destinations. Out of the top 10, 9 are Western countries. China does not even figure in this list. And most of this export is garments. If you see clothes in Europe or the US, most of them will say made in Bangladesh. So Dhaka needs the Western market. It's a question of who can provide the rest. I'm talking about investments and infrastructure, even defense equipment. Bangladesh is a proud country that was born out of war. They don't take kindly to foreign meddling. We know the West specializes in that. We also know that China does not care, which is why India's role is quite important. New Delhi will be hoping to strike a fine balance. On the one hand, keep Western pressure off Bangladesh, maybe even bring in some investments. On the other, keep Bangladesh within India's sphere of influence. You don't want to be ceding space, not even to allies like France or the US. It's a tough balance. But in the face of China's challenge. तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की जो सफारती सतह पे ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के G20 समिट के बाद अब जो फ्रांस के सदर हैं वो बांग्लादेश के विजिट पे हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी डील हो रही हैं। हिंदुस्तानी मीडिया भी एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह बांग्लादेश ने फ्रांस के साथ बड़े मुआहदे कर लिए हैं और 10 एयरबस एयरक्राफ्ट लेने का मुआहदा भी हो चुका है, और बांग्लादेश के सफारती सतह पे ताल्लुकात कई मुमालिकों के साथ अच्छे हो रहे हैं। और G20 समिट के बाद बांग्लादेश का विज़िट कर रहे हैं फ्रांस के सदर, और बांग्लादेश के अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के विज़िट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश से बड़े मुआहदे भी कर रहे हैं। जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मुआहदे के ऊपर और फ्रांस के सदर की बांग्लादेश में मौजूदगी के ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है बांग्लादेश के लिए। जैसे ही उन लोगों ने इस मौके को गनीमत जाना कि जैसे G20 समिट का आगाज़ हुआ, वहाँ पर हर मुल्क का सरबराह तकरीबन आए हुए थे जो इस समिट के अंदर शामिल थे। तो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया कि सबसे पहले उन लोगों ने, जिसमें मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, कि मोदी साहब ने इन दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाया, जिनमें जो बाइडन सरफहरिस्त हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब और फ्रांस के मैक्रोन हैं, और भी यूरोपीय यूनियन के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत मज़ीद बेहतर बनाए हैं। और एक ज़राए के मुताबिक आपको पक्की खबर ये दी जा रही है कि यूरोपीय यूनियन ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है बांग्लादेश के अंदर, जो G20 समिट के बाद जो है इस चीज़ पर ज़ेर गौर किया गया है। और अभी जो एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, एयरबस एयरक्राफ्ट, $3.2 बिलियन के एयरक्राफ्ट का मुआहदा हुआ है जो बांग्लादेश बाय करेगा फ्रांस से। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस के साथ बांग्लादेश के मुआहदे होने जा रहे हैं, और भारत हमेशा फ्रांस के मुआहदों में रुकावट रहा है और बांग्लादेश को जो राइफल तैयारे हैं वो खरीदने नहीं दी गए। लेकिन अब जुनेद भाई अगर देखा जाए तो अब भारत ही जो है ना इस चीज का वो समझने के दरमियान, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब जो फ्रांस है वो भी ये बात समझ चुका है कि अगर हम लोग राइफल तैयारे नहीं देंगे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के पास और भी ऑप्शन है। जिस तरह तुर्की का ऑप्शन मौजूद है, चीन का ऑप्शन मौजूद है, रशिया का ऑप्शन मौजूद है, अमेरिका का ऑप्शन तो पहले से मौजूद होता है। और यहाँ पर देखा गया है कि अब फ्रांस ये बात समझ चुका है कि भारत की वजह से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को खराब नहीं किया जा सकता, और बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ही फ्रांस के सदर ने बांग्लादेश का विजिट शुरू कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।